Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of classical dynamics. Let's begin. एठारे आमे क्लासिकल डायनामिक्स डीएससी पेपर यूनिट नंबर 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 1 यार 1 मार्क टाइप क्वेश्चंस गुड़ी को डिस्कसन करिबा। इज क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1, an inertial frame is defined as a coordinate frame of reference within which Newton's dash law of motion is valid। न्यूटन तांकर गति संपर्कित 3टा लॉ प्रदान करथिले। तबे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पाई सेही समस्त लॉ गुड़िक वैलिड, किंतु नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे न्यूटन्स लॉ गुड़िक वैलिड नुहे। तेणुक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देछि, तेणुक समस्त लॉज गुड़िक वैलिड रहिबो। न्यूटन्स ऑल लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। The special theory of relativity, space intervals like time intervals are not absolute but depends on dash of the observer। According to special theory of relativity रे space interval चा time interval are not absolute, से डिपेंड करुच्ची क्या ऊपर ना ऑब्जर्वर रो स्टेट ऑफ मोशन किंबा कहीदे पार ऑब्जर्वरटा क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोचे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हेले तार स्पेस इंटरवल एवं टाइम इंटरवल अल्टीमेटली परिवर्तित हो जिवो, बट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस किंबा आम कहीदे पार स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन से ऑब्जर्वर रो मोशन स्टेटा कौन अच्छी किंबा से ऑब्जर्वर क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए रॉड इज डैश इन द रेफरेंस फ्रेम इन व्हिच इट इज एट रेस्ट। लेंथ ऑफ द रॉड आइदर ग्रेटेस्ट हम किंबा स्मॉलेस्ट हम। से रेफरेंस फ्रेम रे जो रेफरेंस फ्रेम रे सेटा रेस्ट रे अछि, तो आम टाइम डायलेशन लेंथ कंट्राक्शन यही फेनोमेनन गुड़ी को डिस्कसन करुले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रे। लेंथ इज कंट्राक्टेड केतेबेले जेतेबेले से रेफरेंस फ्रेम रे से विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सांगे गति करिवो, सेतेबेले आमे कहिबा लेंथ शुड बी कंट्राक्टेड अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किंतु एठी द लेंथ ऑफ द रॉड इज डैश इन दैट ऑफ रेफरेंस फ्रेम इन व्हिच इट इज एट रेस्ट। जो जगह से रेस्ट अच्छी माने तार मैक्सिमम लेंथ जेतिकी सेतिकी अच्छी। अल्टीमेटली आमे जेतेबेले रेफरेंस फ्रेम अनुजाई रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस फ्रेम कंपेरेबल टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट रे गति करवा तार लेंथटा कमी गला भली प्रतीयमान हेबो। लेंथ कंट्राक्शन तेणुक स्थिर अवस्था रे ता ग्रेटेस्ट रहिबो, सर्वाधिक रहिबो। दैट रॉड इज ग्रेटेस्ट। द स्पीड ऑफ लाइट हैज डैश वैल्यू इन एवरी इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पाई स्पीड ऑफ लाइटटा कांस्टेंट एवं ता सबु जगह समान हैज सेम वैल्यू। 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। साइमल्टेनिटी इज ए डैश कंसेप्ट बट नॉट एब्सोल्यूट। साइमल्टेनिटी गोटे रिलेटिव कंसेप्ट ता एब्सोल्यूट नुहे। साइमल्टेनिटी गोटे इवेंट अकर होची तार ऑर्डरटा नकर फास्ट गोटे इवेंट है परवर्ती समय आ गोटे इवेंट कंटिन्यू है कि समय ड्यूरेशन रे। गोटे ऑब्जर्वर पाई प्रथम एवं द्वितीय मध्य जो समय गैपटा आउ गोटे ऑब्जर्वर पाई ता डिफरेंट रहिबो ता
absolute नुहे ताहा मध्य relative. Question number 6. A clock is measured to go at faster rate when it is dash relative to the observer. The clock is measured to go at fastest rate. Fastest rate रे माने clock रो time टा से कुछ बढ़ुची. When it is relative to the observer, observer टा जेते बेले rest रे थिबा, is at rest. काରଣ time dilation, moving clock स्लो माने गति करुथिबा घंटाटा समयटा धीरे चलुची बोली हम कहिबा. रेस्ट समय तार मैक्सिमम आसीबो. The clock is measured to go at fastest rate when it is at rest relative to the observer. Question number 7. Minkowski space is a dash space. Minkowski space टा गोटे 4 dimensional space. 4 dimensional space. Space time 3टा कोऑर्डिनेट एवं गोटे टाइम कोऑर्डिनेट रहउची. The path traced by an object in same time, that is space time diagram is called, the path traced by an object in space time diagram is called walled line. Walled line. Space time diagram रे से ऑब्जेक्ट जो बाट देकी जाउची ताकू कहा जीवो walled line. In the 4 dimensional space, the equation describing the propagation of light has the form of, से equation टा गोटे कोन रो इक्वेशन. कोन रो इक्वेशन केउ भली भाबरे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कोन. ए ज्योमेट्रिकल शेप कोन केते बेले कहिबा एते बेले लाइट रो प्रोपागेशन होची. 4 डायमेंशनल स्पेस रे लाइट रो प्रोपागेशन पाई जो ज्योमेट्रिकल पाथ पाउचे से ज्योमेट्रिकल पाथ नथिंग बट ए कोन. तार इक्वेशन होची एटा. क्वेश्चन नंबर 10. द लोकेशंस इनसाइड द अपर कोन एंड लोअर कोन रिप्रेजेंट डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली. हमें कोन पाइले गोटे अपर कोन पाइबा गोटे लोअर कोन पाइबा. तबे अपर कोनटा आम फ्यूचर को सूचौथिला बेले लोअर कोनटा पास्ट को सूचेबो. The locations inside upper cone and lower cone represent future and past respectively. The walled line of a light wave is a straight line making an angle of dash with the axis. Wall line ta axis संगे केते angle करियो 45 degree angle 45 degree. The annihilation of electron and positron results in the production of dash rays. Gamma ray गामा रे प्रोडक्शन केमिति होची जेते बेले इलेक्ट्रॉन एवं प्रोजिट्रॉन मिसुछंती. फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट इज रेस्ट मास इज गोटे पार्टिकल डे स्पीड ऑफ लाइट रे गति करछि तबे तार रेस्ट मास टा केते आसीबो 0 रेस्ट मास. जेउ पार्टिकल डा स्पीड ऑफ लाइट रे गति करिवो तार रेस्ट मास 0 रहइबो किंतु तार एनर्जी रहइबो एवं मोमेंटम रहइबो. उदाहरण स्वरूप आम कहीपर फोटोन. फोटोन रेस्ट मास 0 कि तार एनर्जी अच्छी मोमेंटम अच्छी. तार एनर्जी कारण हूँ कौन ना मोमेंटम कारण तार एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The invariant interval in all inertial system is based on the principle of dash speed of light. प्रत्येक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पाई स्पीड ऑफ लाइट टा कांस्टेंट. इनवारिएंट आम कहूचे तबे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रे ताको कोन कुआ जिवो ताको कुआ जिवो कंस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जे कोनो से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेउना काहे कि लाइट रो स्पीड टा सब जगह रे समान. The principle of constancy of speed of light. The principle of constancy of speed of light. Special theory of relativity is applicable to inertial frame of reference. Is it true? Yes. True. What?
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे वैलिड इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर एक्सेलरेटेड नुहे नॉन एक्सेलरेटेड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर नॉट एक्सेलरेटेड देखिए एक्सेलरेटेड तामने सेंटेंसटा फॉल्स अच्छी ट्रू फॉल्स पचार क्वेश्चन नंबर 17 in an inertial system is given then any other system that moves uniformly and rectilinearly with respect to it is itself inertial state if the statement is true or false तो स्टेटमेंटा कौन दिला आमको गोटे इनर्शियल सिस्टम गिवेन अच्छी आम आउ गोटे सिस्टम नौचे जो सिस्टमटा प्रथमे जो इनर्शियल सिस्टम थिला ता सांगे यूनिफॉर्मली जीव ता सहित रेक्टिलिनियर वे रे प्रोपागेशन करिवो माने गोटे सरल लक्ष्य गति से जीव का सहित आम कंपेयर करुचे क्या रिलेट करके तार गतिटा कराऊे ना फास्ट जो इनर्शियल सिस्टमटा आम नहीं तेबे बर्तमान ये जो सिस्टमटी को आम प्रथम इनर्शियल सिस्टम को रिलेट कराई गति कराइले तेबे से सिस्टमटा से कहूँ जे इटसेल्फ इनर्शियल निजक निजे इनर्शियल हो जाऊँगी दैट ठीक अच्छे ना भूल अच्छे दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट स्टेटमेंट इज ट्रू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं इनर्शियल सिस्टम नहीं अन्य गोटे सिस्टम आनुचे से इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल आम जाने किंतु ताहाकू प्रथम इनर्शियल सिस्टम सहित आम यूनिफॉर्मली एवं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करुचे तेज आम कहीदे पार से सिस्टमटा बर्तमान निजक निजे इनर्शियल हो जाऊँगी दैट इज ट्रू क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी तेज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन दुईटा पोस्टुलेट देते प्रथम पोस्टुलेट को कहुला प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी द्वितीयटा कहगला कन्स्टांसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तेणुक 18 क्वेश्चन आंसर रहिबो आइंस्टाइन्स फर्स्ट पोस्टुलेट of special theory of relativity आइंस्टाइन कर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उपरे दुईटा पोस्टुलेट देते प्रथमटा को कहगला प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी द्वितीयटा को कह कंस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ कंस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आइंस्टाइन कर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वितीय पोस्टुलेटटा इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज कंस्टांट जेकोसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना कहीं स्पीड ऑफ लाइटटा सब जगह सामान तार वैल्यू के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तार तार इंपोर्टेंसटा आम कौन लिखिपर द स्पीड ऑफ लाइट इज कंस्टांट or same irrespective of any frame of reference जेकोसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना कहीं सब जगह स्पीड ऑफ लाइटटा सामान क्वेश्चन नंबर 20 इज देयर एनी प्रिफर्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नो कौन से स्पेसिफिक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको दिया जाए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नुहे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इट ट्रू यस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्यवहार करुचे दैट इज ट्रू स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवारिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एगेन एटा ट्रू ना फॉल्स ये मध्य ठीक अच्छी स्पेस टाइम इंटरवलटा इनवारिएंट रोची दैट इज ट्रू लॉरेंस इनवारिएंट बोली हम कहूचे स्पेस टाइम इंटरवल इज प्रॉपर लेंथ इनवारिएंट फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर प्रॉपर लेंथटा इनवारिएंट फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर दैट इज नॉट करेक्ट कारण लेंथ इज कंट्राक्टेड लेंथ कंट्राक्शन फेनोमेनन ऊपर हम स्टडी कराऊचे दैट इज फॉल्स अंडर व्हाट कंडीशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पाइबा केमिति जेते बेले तार वेलोसिटीटा स्पीड ऑफ लाइट ठारू बहुत कम
that velocity is very less than that speed of light, then Lorentz transformation reduced to Galilean transformation. Galilean transformation useful होचे हमरो क्लासिकल मेकानिक्स थ्रू रे जोठारे कि स्पीड ऑफ लाइट लाइट सांगे से कंपेरेबल नुहे किंतु जेते स्पीड ऑफ सॉरी भूल कहली स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉट कंपेरेबल विथ स्पीड ऑफ लाइट जेते बेले तार पार्टिकल स्पीड को आम लाइट स्पीड सांगे कंपेयर कर दोचे बर्तमान स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी केम इनटू पिक्चर आसीबो जहाँ को आम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रे बुझी पारिबा तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रु आम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन केते बेले पाइबा जेते बेले तार वेलोसिटी वेरी लेस देन दैट स्पीड ऑफ लाइट. Question number 25. By what factor the length of the rod appears to get contracted when it is in motion relative to an observer with the velocity v along the direction of motion? ये हम लेंथ कंट्राक्शन प्रिंसिपल यूज करछे. लेंथ कंट्राक्शन हेले केते फैक्टर रे था कमिबो ता लॉरेंस फैक्टर रे कमिबो से जो लॉरेंस फैक्टर टा का द्वारा हम रिप्रेजेंट करछे गामा तार वैल्यू टा केते 1 डिवाइडेड 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो अंडर रूट देथिला तार वेलोसिटी दे दिजे एतिकी स्पीड ऑफ लाइट आकु कह लॉरेंस फैक्टर. लॉरेंस फैक्टर एतिकी फैक्टर रे ता रिड्यूस कर तार लेंथटा कमी जीवो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी. रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन हम देखिबा. रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जीटा mc स्क्वायर ये जो एनर्जी कौन एनर्जी एटा रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस आम रेस्ट मास एनर्जी फेड़ी दबा m नॉट c स्क्वायर तो आम पाई जाबा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. रिलेटिविस्टिक एनर्जी रु रेस्ट मास एनर्जी जेते बेले आम सब्सट्रैक्ट कर देउछे आउ कोन बळुचे ना रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बळुचे. व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द बॉडी. रेस्ट मास एनर्जी E नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास m नॉट c square rest mass energy. Lorentz transformation can be regarded as a rotation of coordinates in a four-dimensional state, four-dimensional space. Lorentz transformation can be regarded as a rotation of coordinates in a four-dimensional space. ठीक अछि. four-dimensional space कहले तीनटा पोजीशन गोटे टाइम कोऑर्डिनेट जाको हम कोक्सी स्पेस मध्ये कहूचे. स्टेट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक अछि. 28 नंबर that is true. In space time diagram time is taken on vertical axis and spatial coordinate is taken on horizontal axis. and space time diagram जो ड्रा करछे टाइम को हम वर्टिकल नउछे एवं पोजीशन बा स्पेशल कोऑर्डिनेट को हम नउछे होराइजोंटल एक्सिस रे. ए स्टेटमेंट मध्ये ठीक अछि. द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. व्हाट इज ए लाइट कोन. लाइट कोन कोन लाइट कोन आम कौन देखले ना लाइट रो जो प्रोपागेशन रोची से पाथ रो गोटे कोनिकल शेप रोची दैट इज नथिंग बट लाइट कोन. इन से लाइट टा को हम केते बेले कोनिकल शेप पाई पारो जेते बेले ताकू ता ओरिजिन रखिथिबा. इफ द लाइट सोर्स is at origin in a space time curve, then the graph of propagation just like a cone, and it is called light cone. लाइट को आम सेंटर रखुचे तार प्रोपागेशन जो ज्योमेट्रिकल फिगर ड्र करछि ता होछि गोटे कोन आकृतिर. दैट इज नथिंग बट आवर लाइट कोन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. What do internal cavities of the light cone correspond to? लाइट कोन रो इंटरनल कैविटी क्या को सूचाउछि? that indicates time like को ता सूचाउछि. space like time like तो time like को सूचेबो तार इंटरनल टा. what is the nature of walled line of a particle at rest in Minkowski diagram? walled line टा
वर्टिकलटा आम दर्शेब तार वाल लाइन मिंकोक्सी डायग्राम रे वर्टिकलटा वाल लाइन रो नेचर शो करिवो वर्टिकल ए पार्टिकल ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल लेस देन 45 डिग्री विथ द एक्सिस इन स्पेस टाइम डायग्राम इज इट ट्रू और फॉल्स देख ये ग्रेटर देन 45 डिग्री हेले आम कहीपर तार स्पीडटा यूनिफॉर्म रोचे बोली लेस देन देछि तेणुक दैट सेंटेंस इज फॉल्स फॉल्स क्वेश्चन नंबर 34 द स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवारिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखो हम S12 स्क्वायर इज इक्वल टू S21 स्क्वायर कहूचे ठीक अच्छे लॉरेंस इनवारिएंट हो स्पेस टाइम इंटरवलटा दैट इज ट्रू व्हाट डज द वर्टेक्स ऑफ लाइट कोन रिप्रेजेंट लाइट कोन रो वर्टेक्सटा दर्शाऊँ कौन इवेंट स्पेस टाइम रे जो इवेंट होची ता लाइट कोन रो वर्टेक्स सूचाउची इवेंट इवेंट इन स्पेस टाइम रे इवेंटा आमे वर्टेक्स ऑफ लाइट कोन रो बुझ परिबा राइट आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर सिंपल थिला इज इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन क्वेश्चन नंबर 37 राइट द इक्वेशन शोइंग वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी मास रो वेरिएशन होची वेलोसिटी संगे तार एक्सप्रेशन टा केतला m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो अंडर रूट हम जते तार वेलोसिटी को लाइट रो वेलोसिटी संगे कंपेयर करिकी गति कराउचे सेते बेले मास टा चेंज होची केते चेंज होची लॉरेंस फैक्टर रे चेंज होची व्हाट इज लॉरेंस फैक्टर गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट एटा हम कहूचे लॉरेंस फैक्टर A rod of length 1 meter is moving along its length with a velocity 0.6 c. Find its length with respect to an observer moving with the rod itself. The question टी गुटिके बुझिया पय चेष्टा कर गोटे लेंथ ऑफ रड देइछ दैट इज 1 मीटर गोटे रड रो लेंथ 1 मीटर से मूविंग करछि से लेंथ डायरेक्शन रे वेलोसिटी 0.6 c ताने स्पीड ऑफ लाइट संगे कंपेरेबल अछि तार वेलोसिटी हम स्पेशल थ्योरी रिलेटिव अप्लाई करबा तबे तार लेंथ रा केते कंट्रैक्टेड करबा l नॉट इज इक्वल टू हमर आसी जाउ एते की जो फैक्टर अछि l * 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट एमिति मैथमेटिकल फार्मूला पके तुमे कैलकुलेट करथांद किंतु से पचाय जे फाइंड इट्स लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ द रॉड इटसेल्फ से कहूची सेही रड रो लेंथ की ऑब्जर्व करछि जे ऑब्जर्वरटा से रेस्ट थिबा रड सांगे रे जाउछि ता माने ताको केते ऑब्जर्व हबो हे 1 मीटर ही ऑब्जर्व हबो 1 मीटर कारण ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही हमें मापिबा जे लेंथरा कंट्रैक्टेड हैला ना हैलानी बोली से ऑब्जर्वरटा से फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे ही जाउछि रेस्ट रड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रही ऑब्जर्वरटा से फ्रेम ऑफ रेफरेंस रही ताको केते जना पड़िबो ताको ही जना पड़िबो तार रेस्ट जेतिक लेंथ ला बोली 1 मीटर क्वेश्चन नंबर 40 मूविंग क्लॉक्स appears to go slow is it true ठीक अछि टाइम डायलेशन गति करथिया क्लॉकटा धीरे चलछि बोली हम कहउछे लेंथ कंट्रैक्शन इज रेसिप्रोकल डू यू एग्री व्हाई यस length contraction is reciprocal reciprocity of length contraction which implies हमें कहिबा reciprocity of length contraction कहीं कि जदि को ए गोटे ऑब्जर्वर ए गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रही बी अन्य गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रही ए टा को हम बी सहित कंपेयर करवा जे बी टा लगुच ए रे लेंथ रे कंट्राक्शन होची आकु जेतिकी लेंथ रे कंट्राक्शन लागला अगेन ए को लागिवो बी रे मध्ये सेतिकी लेंथ रे कंट्राक्शन होची तेणु करी लेंथ कंट्राक्शन इज रेसिप्रोसिटी जते बेले दीटा जांक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्मली गति करथिवो गोटे रेस्पेक्ट रो अन्यटी तेबे हम कहि परिबा लेंथ कंट्राक्शन इज रेसिप्रोकल क्वेश्चन नंबर 42
write the expression for momentum of a photon with energy ଦେଇଛି momentum ପଚାରିଛି p ଟା ଜାଣି କେତେ ଆସିବ e divided by c ହେଉଛି ତାର momentum in the relation E is equal to p square c square plus m naught square c fourth under root what is E and p এটা ହେଉଛି relativistic energy expression ତେଣୁକରି e ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ relativistic energy p टा relativistic momentum relativistic mass energy relation होची E is equal to p square c square plus m naught square c fourth under root if ds is equal to 0 in one inertial system then in any other inertial system what is the value of ds it will be also 0 यदि को एइथरे 0 आछि से रेफरेंस फ्रेम पाई इनर्शियल सिस्टम रे ds टा 0 आछि सिमिलरली अन्य गोटे इनर्शियल सिस्टम रे ds टा मध्ये 0 आछिबो इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ ए बॉडी वैरीज विथ वेलोसिटी इज इट ट्रू तार वेरिएशन एक्सप्रेशन मध्ये हम लिखुतले मास टा केमिति वैरी करछि m is equal to m naught divided by 1 minus v square by c square under root ए भली भाव रे आमे शॉर्ट क्वेश्चंस गुडी को आलोचना करिनले जहा कि क्लासिकल डायनामिक्स डीएससी पेपर रो यूनिट नंबर 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1 मार्क क्वेश्चंस गुडी को थिला ए क्वेश्चन नंबर 1 to 13 क्वेश्चन नंबर 14 to 25 क्वेश्चन नंबर 26 to 36 and 37 up to 45 so with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.